4C के बारे में ध्यान रखना हमेशा अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, करेज इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, केयर एंड कमिटमेंट। कंसिस्टेंसी जो भी कर रहे हो उनमें उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं आज कर रहा हूँ कल कर रहा हूँ परसों इच्छा नहीं हुई करने की, सक्सेस ऐसे नहीं मिलती। दूसरा करेज, आप में ना अंदर आप करेजियस होने चाहिए। करेजियस का मतलब ये नहीं होता, आप करेजियस होने चाहिए सही अच्छे काम करने के लिए जो आप में इम्प्रूवमेंट लेके आए। कई लोग है ना करेज को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कई लोग बहुत करेजियस होते हैं लेकिन गलत तरीके से उसे इस्तेमाल करते हैं। घर से भाग गए, मूवी देखने बिना माँ बाप के पूछे चले गए, फ्रेंड्स के साथ निकल गए, हैंग आउट कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, सिगरेट विगरेट पी रहे हैं, बहुत दैट्स रॉन्ग। ओके, करेज का मतलब ये नहीं होता कि यू हैव टू ट्राई समथिंग न्यू विच इज़ एक्चुअली नॉट बेनिफिशियल टू यू। करेज का मतलब क्या होता है? करेज मैं उसे मानता हूँ कि जब आप बेसिकली अच्छा काम करने के लिए, जब आपको डर लगता है उस अच्छे काम को करने में, वो चेंज लाने में जो कि अच्छा है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए अच्छा है, अगर आप उसको करने के लिए करेज दिखाते हो ना कि मैं ये करूँगा 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 करूँगा, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं किसी के बाप की भी नहीं सुनता, ऐसा अगर फीलिंग आता है दैट इज कॉल्ड करेज। समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड करेज। तो करेज का मतलब होता है पॉजिटिव वे में ऐसी चीज जो आपको इंप्रूव करे, दैट इज कॉल्ड करेज। केयर योरसेल्फ। इफ यू डोंट लव योरसेल्फ यू कांट लव एनीबडी एल्स इन योर लाइफ। यू हैव टू लव योरसेल्फ, ओके, बिकॉज यू आर द पर्सन हु इज रियली इंपॉर्टेंट टू यू. You are the only person who know you very well. Are you getting my point? So do care about yourself. Yes. You are the person, you are the only person on this earth you have to live with. Okay, you can't leave yourself. Try to understand. So as always, this thing I always say to everybody who really think, because exam we have no idea, okay, what will happen with us. No, we have no idea about that. We don't know. We are giving our best, okay, 100 200%, but we have no idea we will be selected or not, okay. And you don't have to care about those things, because you all know almost 14 to 15 lakh students are there, okay. So in that case seats are only 80,000. So almost 14 or 15 lakh people, in those 14-15 lakh people, definitely 13 lakh 50,000 or 13 lakh people will be with no seats, okay. They will not get any allotment. So don't think I can't do anything if you are not getting the seat in MBBS. So don't think you can't do anything in your life. No, it's not like that. That's what I'm saying. Just care yourself, okay. You are important to you. Exam is, yes, important, but not so much important than you. Try to understand that care is very much important, okay. You have to love yourself, and that love will make you successful, because if you love yourself you will definitely get up early in the morning and you will do something for your life, okay. And the last C is basically commitment. That is again very much important, okay. I don't want to take the name of Salman Khan, but really that dialogue is really fascinating. एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी मैं उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनता. दैट कमिटमेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. वंस यू से समथिंग इन to yourself, if I don't know about anybody else, but in your life if you are committing something you have to fulfill that, but for yourself please fulfill that thing. Try to understand, okay. If you say I will do that, if you say that okay 20 questions of bio, 20 questions of physics and 20 questions of chemistry I'll do, you have to do that. You have to do that. समझ रहे हो? और अगर आप वो करते हो ना, that commitment if you fulfill in your life, and if you are true to yourself, that will give you another level in your life. That commitment is very important, okay. So 4C is for your obviously for your success in your life, and that will give you boost in NEET exam, in any exam of your life basically. So those 4 C's are consistency. You have to be consistent if you want to do anything. You have to be courageous, take steps and go for that. You have to be
you have to love yourself, you have to take care of yourself, because you are very much important. Exam is important, no doubt, but you are so much important to you. And the final thing is commitment. Okay, you have to tell yourself that yes, I have committed this thing to me, that I just want, with 200% efforts in NEET exam, I will give 200% of percent, basically my efforts I'll give. So that particular commitment, if you do with yourself, you have to fulfill that. Okay, that is very much important. Results are not important, whether you will get that seat or you will not, that doesn't matter. Matter is how committed you are about